पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC का 8वां मीडिया फोरम मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और चीनी मीडिया के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग देने, CPEC मंसूबे के खिलाफ फेक न्यूज़ के खात्मे और मौसर जवाब देने पर इत्तफाक किया गया। फोरम का एहतमाम पाक चीन इंस्टीट्यूट और चाइना इकनॉमिक नेट ने मुश्तरका तौर पर किया था। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, CPEC ने पाकिस्तानी अवाम में उम्मीद, एतमाद और यकीन पैदा किया। CPEC से पाकिस्तान का समाजी इक्तिसादी मंजरनामा तब्दील हुआ। CPEC सिर्फ एक बुनियादी ढांचे का मंसूबा नहीं, इस मंसूबे के तहत 2013 से अब तक 2,36,000 मुलाजमतें पैदा कीं। CPEC ने पाकिस्तान की मौशी नमू को नुमाया तौर पर बुलंद किया। In a world where information bombards us constantly, shaping our thoughts and opinions, it's crucial to sift the facts from fiction. The CPEC Media Forum holds significant personal importance for me. I had the honor and the privilege of participating in the 4th edition of CPEC Media Forum in 2018 in Beijing. पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ोइडिंग ने अपने खिताब में CPEC मंसूबे की अफादियत पर जोर दिया और कहा कि ये मंसूबा दोनों मुल्कों और खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने मीडिया के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। 当然，我们要特别的感谢孙卫东副部长、孙卫东大使，特别的向这个论坛发来了贺信，而且也充分的肯定了两国合作取得的重要的进展，以及我们媒体合作这个所做的媒体界我们各个媒体所做的大量工作，也提出了下一步加强双方媒体间合作、加强舆论引导的希望和要求。 My thanks also goes to His Excellency Mr. Sun Weidong, Vice Minister of Ministry of Foreign Affairs, China, and he has sent a special congratulation letter to the forum and speak highly of our bilateral cooperation, and he also speak highly of the hard work of the media friends of our two countries, and he also makes some requirements and proposals to further enhance our collaboration. तकरीब से सेनेट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने अपने खिताब में कहा कि चीन और पाकिस्तान दो करीबी दोस्त हैं। दोनों ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। CPEC गेम चेंजर मंसूबा है और मगरबी मीडिया के बेबुनियाद प्रोपोगेंडे के तोड़ के लिए पाकिस्तानी मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। मीडिया फोरम के इनेकाद से राब्ते बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रोपोगेंडे के लिए $6.5 ट्रिलियन फंड भी दिया। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि 28,000 तलबा चीन में ज़ेरे तालीम हैं। पाकिस्तानी मईशत ने तरक्की की है। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद को बहुत रोजगार मिला है। बिजली के मंसूबे हों या इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन ने बड़ी सरमायाकारी की है। In the last 10 years, China invested $1 trillion in the Belt and Road Initiative in 3,000 projects, lifting 40 million out of poverty in Asia, Africa, Latin America, and Europe. In the last 20 years, in the so-called war on terror, the United States squandered $6.5 trillion fighting wars in Pakistan, in Afghanistan, in Iraq, in Syria, in Libya, in Somalia, and in Yemen. And these are figures not of mine figures, but of the Brown University in Rhode Island, the USA. So the US approach, security-centric. Chinese approach, economic-focused. Connectivity, and even now, last week, you mentioned, Mustafa mentioned about $100 billion being given by Xi Jinping on green development. The US has asked for $104 billion in weapons for the war in Ukraine and the war against the people of Palestine, the crimes being committed by Israel against people in Gaza and occupied Palestine with the help and support and connivance of the United States. So they are talking of green development, 100 billion. They are talking of 104 billion in arms, weapons for wars. And this similarly, this narrative is apparent
China talks of modernization. The US talks of militarization of international relations. China talks of building bridges, whether it's Iran, Saudi Arabia, or Proshima, whether it's trying to solve the issue of Palestine. The US builds barriers, tariffs, duties, protectionism. And China focuses on cooperation and connectivity through the Belt and Road. The US talks of conflict and confrontation, a new Cold War. They are also arming India against China, which will also be against Pakistan. Quad, AUKUS, Asian, NATO. So this whole pattern is there. So for us, it's very clear. We stand on the right side of history, and we stand with China because China stands with Pakistan on all our core interests.